हैप्पी बर्थडे दादा बाबा, आप अल्लाह मियाँ सेहत दे और आप हमारे साथ हमेशा रहें. आई लव यू. Happy birthday to my most favorite principal ever. Sir, I wish you a great year ahead, full of love, happiness, and most of all, the best of health. God bless you, sir. Take care. Happy birthday again. Assalamu alaikum, sir. This is a quick note to let you know that I've always looked up to you in my school days and found your personality to be very inspiring. You were a great principal and even greater human. You will always have this special fan, and that's me. Wish you a wonderful birthday with best of health. My regards to you and your family. Take care. Allah Hafiz. Happy birthday, sir. Many, many happy returns of the day. God bless you. May you celebrate this day to the fullest with your friends and family. Allah Hafiz. Today is birthday of Sir Brigadier Sayyid Anwar Hussain Kirmani. I am Fazail Mudassir from the 2009 batch of Metric APS Okada. I was at APS Okada for 13 years from my kindergarten to my metric. So Kirmani had 2 tenures as principal over there, and his tenures were the best time for the learning and for the institution, as well as the character building of the student. I wish him health and best of luck, and I hope he will continue the good work. Happy birthday, sir. Assalamu alaikum. Happy birthday, Sir Kirmani. I wish you very good. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sir Kirmani. Happy birthday to you. Assalamualaikum, sir. A very happy birthday. Although I was very little, I was in 4th or 5th grade, but I still remember your graceful personality walking through the corridors of APS. Everyone was very scared of you. The way you held the discipline in our school was exemplary. Again, I wish you a very happy birthday. I wish you a very healthy and a long life. Thank you. Happy birthday, sir, from me and my cat, all the way from California. I don't know if you remember me, but I used to be in the 8th grade back in 2005, 2006. And me and my friend Zainab used to be a little bit of troublemakers back then. Hopefully, we didn't give anybody a hard time. Also, keeping you in my thoughts, I hope you have a happy birthday, and I wish you health and happiness. अस्सलाम वालेकुम सर. मुझे उम्मीद है कि मेरी शक्ल देख के आप मुझे पहचान गए होंगे. वैसे तो मूंछें और दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू विश यू अ वेरी वार्म एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे. अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और आपका साया हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे. आमीन. गॉड ब्लेस यू सर. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो. आज मेरे अज़ीम उस्ताद मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब ब्रिगेडियर रिटायर अनवारुल हसन करमानी साहब की सालगिरह है. सर, मैंने आपसे लाइफ में बहुत कुछ सीखा, जिसमें से मैं एक का ज़िक्र करूँगा, वो है वक़्त की पाबंदी और डिसिप्लिन. वक़्त की पाबंदी ने ना सिर्फ मुझे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाइफ में दूसरों से मुमताज़ किया, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने इसके बेइंतहा फ़वाइद हासिल किए. आज आपकी सालगिरह के मौके पर आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान की रहमतें, नेमतें, सुकून क़ल्ब और तवील सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए. आमीन. Assalamu alaikum, sir. My name is Maria Irfan. I used to be your student in Army Public School and College, Okara, Kent. On your special day, I wish you all the luck, success and happiness. And may you have a long life full of contentment and good luck and prosperity. I just want to say
that we are celebrating you, not because it's courteous, but we sincerely wish to see you smile on your special day. And another thing I wanted to say, that you were truly kind and considerate. You were so supportive and encouraging throughout my tenure in that school. So me and my daughters are saying a very happy birthday to you. Everyone say happy birthday, sir. Happy birthday, sir. And thank you so much, sir, for being there for us. And we miss you. We really miss you. And take care, sir. Take care, sir. Allah Hafiz. Happy birthday once again. Assalamu alaikum, sir. This is your student Fatma Riaz from a good 15-20 years ago in APS Okara. I just wanted to wish you a very, very happy birthday. May Allah Ta'ala bless you with a long and a healthy life. And I wanted to thank you for always inspiring us and pushing us to achieve our goals. I hope you have a wonderful day. Happy birthday to you. Happy to you, birthday. Assalamu alaikum, sir. Hope you're having a great day. It's been an honor to have been patronized by you. Lots of prayers your way. Have a great day. Allah Hafiz. Allah Hafiz keh dein. Bye bye. Bye bye. Assalamu alaikum, Sir Kirmani. Happy birthday. Many happy, healthy and blessed returns of the day. I just wanted to thank you for being such an amazing principal. I mean, we think of Okara and we think of APS Okara and we think of you even after all these years. So thank you so much. You were the embodiment of discipline and just a good character. So thank you for teaching us so much. Hello, Assalamu alaikum, sir. This is Fatma Farooq from Dallas, Texas. I wanted to wish you a very, very happy birthday. May Allah bless you with a long, healthy and beautiful and prosperous life. We still miss you. We still remember you in our prayers, and we wish and hope and pray कि इंशाल्लाह जब next time हमारा पाकिस्तान चक्कर लगे तो हमारी दोबारा आपसे मुलाकात हो सके. और ये है कि आप हमारी दुआओं में हमेशा हमें अभी भी याद हैं और हम उस टाइम को याद करके अभी भी उतना ही खुश होते हैं जितना हम उस वक्त होते थे. तो ये कि कभी आपका इस तरफ चक्कर लगे यूएस की तरफ तो यू आर मोर देन वेलकम इन आवर होम, इन आवर प्लेस. और इंशाल्लाह जब हमारा चक्कर लगेगा तो वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि हम आपसे मिल सकें. तो ये है कि प्लीज take lots of care of yours and wish you a very healthy and blessed and many, many happy returns of the day. Take care. Thank you. Happy birthday, Uncle. Such an inspiration. हमेशा से second father. Uncle, many, many happy returns of the day. Allah Ta'ala आपको सेहत दे और आप हमेशा खुश रहें, हमारे सब पे सलामत रहें. आमीन. Happy birthday. Salam, sir. I consider myself a lucky person, for I have found a father, a Tayabu, and a teacher in one person. Today, I'm going to address you as my teacher and as my principal, for today I am wishing you among your students. And I am proud that I had and still have a mentor like you in my life. All my life, I've merely been an average student, and back then, I did not understand how you were developing my personality by being my moral shadow. Your actions instilled professional morality in my deepest cause, and I can proudly say that my moral compass is unwavered because of you, and I have no doubt about that. Thank you for being my teacher, thank you for being my principal, but most of all, thank you for being my father, my Tayabu. May you have a prosperous life ahead of you, and you keep shining your shadow on our life. I love you so much. Happy birthday, Tayabu. Happy birthday. बिगड़े किरमानी सर, अस्सलामु अलैकुम. आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो. अल्लाह ताला आपको बहुत सारी ऐसी सालगिरहें दिखाए अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, खुशियों के साथ, अपने बच्चों की, उनके बच्चों की खुशियों के साथ. और आप इसी तरह हमारे सर पे कायम व दायम रहें. आप हमेशा थे, हैं और हमारे लिए रोल मॉडल रहेंगे. आप हमारे मेंटोर थे और मेंटोर रहेंगे. मुझे सर्विस में जब भी कभी कोई ऐसा मौका आता था जहाँ
गाइडेंस की ज़रूरत होती थी, तो मैं ये सोचता था कि अगर ब्रिगेडियर किरमानी मेरी जगह होते तो क्या करते, और मैं उसी तरह उसके मुताबिक ही अमल करता था। जो मैंने आपकी ज़ात में और आपकी शख्सियत में जो चीज़ें देखी, फिर मैं उसी से अपना डिसीजन लेता था। क्या कमाल शख्सियत, इतना हौसला, एक सच्चा इंसान, छोटों को प्रोटेक्ट करने वाला, हमेशा कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, हर एक के लिए अच्छा सोचना, कभी किसी की बुराई नहीं करनी, हर एक का अच्छा पहलू ढूंढना और उसी के बारे में बात करनी। सर दिल का गयास सर, आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको हज़ारों इस तरह की खुशियाँ अता करें और आप और आपकी फैमिली सब खुश रहें, आबाद रहें और आप उनकी खुशियाँ देखें। और हम चाहते हैं कि आपका हमारा साथ जितनी देर तक रहे और जितना पायदार रहे उतना बेहतर होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। I'm Lieutenant Colonel retired Akil. I've been asked by my daughter Haya to speak for Brigadier Kirmani as they are celebrating his birthday on the next day. So in other words, Brigadier साहब, सारी उम्र आप हमारी ACRs लिखते रहे हैं, अब ज़रा दिल थाम के बैठे, अब हम आपकी ACR लिखने लगे हैं, लेंगे बदले सारे आपसे। Since I got birth in the hands of Colonel Kirmani in 56 Mountain, so I take him as a role model for me, and throughout my service I have been copying him, I have been trying to be like him. He is a mentor, he is a guide, and whatever little I went forward in the army, I think he has a great contribution in that. In our professional grooming, Colonel Kirmani, he inculcated, rather he injected sense of responsibility, integrity, discipline, unit spirit, and so many other things which only his personality that could give us. यूनिट का माहौल जो इन 4 सालों में 56 फील्ड में हमने देखा, later on I joined 5 more units and I've been trying to have that kind of environment, but in a few units we reached near to that, but exact वो वाली बात नहीं हो सकी। मैंने उनसे जो चीज़ें सीखी उनमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि living with means, I never saw him getting anything from the unit for his home and spending unit fund as I saw later on spent by so many other officers. दूसरी बात जो मैंने उनसे सीखी वो थी बुर्दबारी। किसी मौके पे कर्नल किरमानी ने, हमने जितने मर्जी बड़े ब्लंडर किए, मैंने कभी उनको आवाज़ रेज करते हुए, हमेशा पेशेंस के साथ प्यार से हमें उन्होंने समझाया और वो बात ज़्यादा तरीके से हमें समझ आई। एक और चीज़ जो एज ए CO मैंने कोशिश की कि मैं प्रैक्टिस करूं वो था किसी आफत को कन्फ्रंट करने का हौसला, और उसके लिए मुझे याद है कि एक दफ़ा एक गन अनहुक हो गई थी और दरिया चनाब के पास वो गन उल्टी पड़ी थी। कर्नल किरमानी पीछे से आए, मैं वहाँ खड़ा उसको सीधा करवा रहा था और सिर्फ एक बात उन्होंने कही, संभाल लोगे? मैंने कहा सर हो जाएगा, एंड दैट्स ऑल, ही वेंट अवे। रात जब मैं गन लेके वहाँ पहुंचा हूँ और बाद में मैंने उसको ओवरनाइट ठीक ठीक करवा के, तो ही अप्रिशिएटेड मी इन फ्रंट ऑफ ब्रिगेडियर रऊफुल्लाह कि सर देखें ये गन थी, बताएं इसमें कहीं आपको पता लग रहा है कि कुछ हुआ था इसको। सो एक इतना बड़ा इवेंट और इतना लाइटली लेके एक बहुत बड़ा लेसन वाज गिवन बाय कर्नल किरमानी that blunders, they do happen in the unit and one have to face them boldly. He was so caring that on one of the Eids, myself and Captain Raheel, we stayed back in Sialkot with our troops, and early morning before we got up, he brought sheer khurma to our room and served it to us. And likewise, इतने किस्से हैं कि I can write a book on ब्रिगेडियर किरमानी। मैं मुख्तसरन बच्चों में ये कहूँगा कि
You and me, we are lucky to be associated with a person جو جس بھی فیلڈ میں گیا وہاں اس نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. 56 کا ابھی تک تو ہی از دی بیسٹ سی او. اس کے بعد وہ الخیر یونیورسٹی میں اس نے ایک دم سے بہت اسکائی ہائی اس نے ایک دم سے سپیڈ پکڑی. وہاں سے پھر وہ ایجوکیشن سائڈ پہ اور اسکولوں میں آئے. تو آج آپ دیکھ رہے ہو کہ ماشاءاللہ وہ اسکولز کی ضرورت بن گئے ہیں اور ان کے بغیر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے یہ اسکول پرفارم نہیں کر سکے گا. اللہ تعالیٰ بریگیڈیئر کرمانی اور ان کی فیملی کو اپنے حفظ و رکھے اور ان کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. بریگیڈیئر کرمانی اللہ تعالیٰ آپ کو 75ویں سالگرہ مبارک کرے اور اللہ تعالیٰ اس قسم کی بہت سی سالگرہ آپ کو آئندہ کے لیے بھی مبارک کرے. السلام علیکم شاہ جی, کی حال چال ہے؟ ہیپی برتھ ڈے. خدا تعالیٰ صحت دے تمہوں ٹھیک ٹھاک رکھے تے بڑی خوشی ہوئی ہے. اٹ از سویٹ 16 اور 116. اللہ حافظ. السلام علیکم, کیا حال ہیں آپ کے؟ ہم سب جو ہے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, اسٹارٹنگ ود مہدی. اچھا, تو میں نے یہ کہنا تھا کہ ایک برج کی کنسٹرکشن میں اور اس کی انجینئرنگ میں سب سے امپورٹنٹ بات جو ہوتی ہے وہ اس برج کا کی اسٹون ہوتا ہے. اگر وہ کی اسٹون کولیپس کر جائے تو پوری برج کولیپس کر جاتی ہے. اور میڈیسن میں وہی کی اسٹون کی بون کہلاتا ہے, اور یہ کی بون فٹ میں آرچ کو مینٹین کرتی ہے. اور اگر یہ کی بون ٹوٹ جائے تو جو فٹ کی آرچ ہوتی ہے وہ بھی بیٹھ جاتی ہے. تو ماموں جی, آپ ہماری فیملی کی وہ کی بون ہے, کی اسٹون ہے. آپ کے بغیر ہماری فیملی کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. پلیز اپنا بہت 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 خیال رکھنا ہے آپ نے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. وی آل لو یو سو مچ ماموں جی, اور آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں. بائے. السلام علیکم ابو جی, یو مینز لاٹ ٹو می. آپ ہیں تو میں ادھر تک پہنچا ہوں. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. ہیپی برتھ ڈے. السلام علیکم بابو, اللہ آپ کو لمبی صحت دے, اور وداؤٹ یو دیر از نو ہیپینس. السلام علیکم بابو, ہیپی برتھ ڈے. آئی وش آئی وڈ بی اے سولجر لائک یو, اور اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. ابو, آپ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پہ سلامت رہے. ہیپی برتھ ڈے ابو.